मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हमको गिरगिट की तरह रहना चाहिए कलर बदलते रहो बचपन से. वी हैव बीन टोल्ड टू सेव मनी, बाय चीप. Whenever we buy, we try to bargain to get cheaper, and that mentality hurts in market. Now after COVID especially, there are a lot of finfluencers, but there are many who don't know anything. What is it about astrology that is linked to wealth from your standpoint? Okay. Yo, what is up my friends? क्या हाल है आपका? स्वागत है एक और एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट के अंदर. मेरा नाम है विनम्र कसाना. आप देख रहे हैं बढ़िया A1 टॉप पॉडकास्ट. हमारे गेस्ट का नाम है विशाल मलकान. ये इंडिया के बहुत सारे लोगों को और बाहर के लोगों को भी स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग देते हैं. इससे पहले यू ऑब्वियसली सीन सेवरल पॉडकास्ट दैट आई हैव डन ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक्स, पर इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली आई हैव नेवर स्पोकन टू समवन अबाउट हाउ स्टॉक्स वर्क इन इंडिया. ऑनेस्टली बताऊं, एज अ कंप्लीट नूब इन स्टॉक्स, मैंने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी है. इस लेवल की डिटेल के अंदर मैंने इससे पहले ऐसी कॉन्वर्सेशन अभी तक तो नहीं करी है. वी डिस्कस्ड पोकर और स्टॉक मार्केट में क्या एनालॉजीज है कॉमन, ठीक है, लोग किस तरह टिपिकली ओवर इमोशनल होकर नॉन स्टर्क होकर अपने पैसे हरा देते हैं, एंड व्हाट इज द स्मार्टेस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिव इनकम. ठीक है, विशाल इज अ नो नॉनसेंस गाय, बट दिस इज अ फन कॉन्वर्सेशन विद टन्स ऑफ ग्रेट इनसाइट्स. आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखी होंगी. डिड आई से दैट अगेन? यस, you've never seen a conversation like this about the stock market, and Vishal is one of the best guys to teach you that. The episode with Vishal Malkan begins in 3, 2, 1. विशाल जी, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे, आपके स्टूडियो में, हमारा शो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रिप टू बोरीवली वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप. मैं कॉफ़ी पीते हुए, आपकी कहानी पढ़ते हुए, जो कि बहुत समय से पढ़ता ही आ रहा हूँ, ठीक है, रिसर्च करते हुए आ रहा था, कपल ऑफ थिंग्स केम टू माइंड. ठीक है, मैं जिस तरह के भारत से आता हूँ, उस तरह के भारत में एक्टिव इनकम पे बहुत एम्फोसिस दिया जाता है. और मानो ना मानो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद, ज़रूरत ऐसे स्टार्टअप्स आने के बाद, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिलने के बाद, आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट का नाम सुन के 3-4 चीज़ें आती हैं. सब कुछ हार जाएगा हमारा बेटा ख़राब हो जाएगा स्टॉक मार्केट में. क्या कहते हैं, ये तो जुआ है, ये सट्टा है, ये बुरी चीज़ है. अपनी जॉब, अपने पैसे यहीं तक मेंटेन करो, इन चीज़ों में मत पड़ो. राइट, इन मिथ से ही स्टार्ट करते हैं. आई ग्रो अप विद दिस माइंडसेट. आज भी मेरे को लगता है कि यार, मैं अगर ये सब मैं अगर चला जाऊँगा ना इसके अंदर आफ्टर ऑल दीज इयर्स इन एजुकेशन, तो कुछ बुरा हो सकता है. या क्या आपने ये माइंडसेट, have you seen this across the country with people that come to you? What is your opinion on it, as because you're someone who's on the other side of it? Yes, first of all, welcome to our studio, and thank you for having me on your podcast. So you guys are doing an amazing job. So I would like to say this कि ये सारे myths जो आपने बताए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तभी मुझे भी बहुत सुनना पड़ा था अपने फैमिली मेम्बर्स से, पेरेंट्स से, और अपने दोस्तों से, और बाकी टीचर्स से भी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था. और तभी बोलते सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, सब हार जाएगा, यहाँ पे कोई पैसा कमाता नहीं है. बट I had a unique experience. So I'll start with my journey, which is way back 1993 when I was in 8th standard. That's when I got introduced to the world of stock market. And who introduced you? So introduced मतलब ऑटोमेटिक ही हो गया, मतलब क्योंकि मैं अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस जाता था कालबा देवी बॉम्बे में. वो कपड़े के बिजनेस में थे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक मार्केट की बातें हो रही थी, क्योंकि दैट वाज द ईयर व्हेन हर्षद मेहता थिंग हैपेंड. The scam thing was the star at that time. Was a star in all over newspapers and stuff like that. So everybody in the local train and everywhere, everybody's talking about this only. So I was like getting those words in my ears, like Tisco, Telco, which is Tata Steel, Tata Motors, ACC, up, down, Sensex, all that. So I started asking questions. I got curious. तो मैंने अपने पिताजी को बहुत कुछ पूछा. वो भी एक पैसिव इन्वेस्टर थे, उनके पास कुछ छोटे मोटे शेयर्स थे. तब से मेरा इंटरेस्ट हो गया और मुझे लगा कि ये मेरे को करना है. अब मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे पैसा ये वो. आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नंबर गेम, बाय द नंबर्स विच आर गोइंग अप एंड डाउन. सो एज सून एज माई 10th स्टैंडर्ड गॉट ओवर, आई डिसाइडेड टू डू दिस. तो मेरे को पहले ऑफकोर्स घर पे भी ना बोली और सबने ना बोली, बट मैंने कॉलेज भी ऐसा चुना जो स्टॉक मार्केट से नज़दीक है. There is a college called KC College, which is like 10-minute walking from the Bombay Stock Exchange building. That's where I took my admission. Against all my friends who were taking admission somewhere else, but I said I want here because it's near to stock कॉलेज market. आपने नाम के लिए करा, आपको पता कि मैं इस स्टॉक मार्केट में घुसूं किस तरह से. ऐसा ही एक्चुअली वैसे ही हुआ, नाम के लिए ही था कॉलेज में. 5 साल मैंने स्टॉक मार्केट में ज़्यादा बिताए, ना कि कॉलेज में. मैं बोलूँगा पार्ट टाइम मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बट मेन मैंने स्टॉक मार्केट में ग्रेजुएशन किया, जहाँ पे मैंने सीखा पैसा बनाना भी और पैसा गंवाना भी. और उसके बाद समझ में आया कि ये सट्टा नहीं है, गैम्बल नहीं है, एक साइंस है. तो मेरी शुरुआत कैसे हुई, एक पहला साल मैंने खाली स्टडी किया, और मेरे एक कज़िन अंकल थे जो ट्रेड करते थे. तो एक सवाल है कि आप जब स्टडी कर रहे थे, आज तो चलो you've got everything on your phone. Yes.
when you were starting out, how do you study? Exactly. So that's the interesting part. My uncle was a trader and I used to go with him उनके ऑफिस, उनके साथ जाता था. तो उन लोग हैंडमेड नोट्स बनाते थे, जहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस का आज का ओपन, हाई, लो और क्लोज 4 प्राइसेस होते रोज के, वो लिखते थे और रोज लिखते थे. फिर उसका एक चार्ट बनता था अप डाउन और ऑल दैट. दैट वाज लाइक मैनुअल टेक्निकल एनालिसिस. And these people had full-time jobs? They had some of them full time, some people were trading with the job or some business freelancing thing, but my uncle was full time, so I just accompanied him for most of the time. Then after a year I started कि मुझे अभी कुछ तो करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लगा कि समझ में आने लगा है. सो आई हिम्मत करके पिताजी से बात की और बोला कि ट्रेड करना है. तो बहुत वापस अपोजिशन, और बोला फाइनली उस ज़माने में एक छोटा सा अमाउंट दिया मुझे कि 10,000 रुपये, और बोला कि ये फर्स्ट एंड लास्ट, आफ्टर दैट स्टॉक मार्केट इज ओवर. तो मतलब ठीक है, 10,000 से तो मैं करोड़ों बना लूँगा, बट इट गॉट ओवर. एक चीज़ और, सॉरी मैं बीच में आपसे पूछता रहूँगा. नहीं, इट्स ओके. जब पैसे मिलते हैं, किसी ने आपको सीट बनी 10,000 रुपये, आपके मन में सीधा आता है अब तो मार्केट के ऊपर मेरा नाम होगा. यस, परफेक्ट. सो एज वहाँ पे एक ब्रावाडो होना, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, करेज होना वर्सेस एक्चुअलिटी, राइट? Does this happen to people who join the market daily? Absolutely, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग 10,000, 20,000, 50,000 से तो लाखों कमा लेंगे. और वो एक स्पेशली विद यंगस्टर्स, बिकॉज दैट हॉट ब्लडेड थिंग होता है, और बोलता है मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं कर लूँगा, बट इट डजंट वर्क. इट्स ऑल अबाउट मैं तो गेम कर लूँगा, सिस्टम को फिगर आउट कर लूँगा, आई एम वन स्टेप फर्दर. यस. तो मैंने भी वही सोचा, बट मेरे 10,000 ख़त्म हो गए बहुत जल्दी, और बाद में पता चला कि बहुत कुछ मुझे नहीं समझ में आता है जो मुझे समझना पड़ेगा. तो धीरे धीरे फिर से स्टडी किया. फिर पैसे तो नहीं थे, तो अंकल के साथ एक एक शेयर ट्रेड करता. वन शेयर यू कैन लाइक अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेडिंग. एंड धीरे धीरे करके मार्केट वॉज लाइक बूमिंग. 1997, 98, 99, बिफोर द .com bubble which happened in 2001, there was a .com boom. Right, so in that boom, I made some good amount of money. Now, I would not say good, like a fortune, like a mini fortune that time. It was like 20 lakh rupees. आपकी फुल टाइम जॉब थी उस टाइम पे? नहीं, मैं तो कॉलेज में था. अच्छा. I was in college and trading. तो आपको जब सब लोग कॉलेज के प्रोफेसर कॉमर्स वगैरह पढ़ा रहे होंगे या कुछ और पढ़ा रहे होंगे कि अकाउंटेंसी, आपके समझ में आती थी कि ये क्या कर रहे हैं? समझ में आती थी, because I'm also dealing, I'm in commerce and I'm dealing with stock market. But could you see the practicality and the theory? Not to the extent, because मैं जो कर रहा था, I was playing with totally the price action, which is now we call technical analysis. And जो commerce college में सिखाते हैं, that's called the fundamental analysis. Yeah. So there are two analysis, and one of them is technical, one of them is fundamental. So I was more on technical side. पैसा तो बनाया मैंने, but boom bust हुआ. तो वो जो बनाया था, मुझे लगा मैंने एक्सपर्टीज से बनाया, वो एक्सपर्टीज नहीं थी, लक था. और ये बहुत बार होता है लोगों से अभी भी. जब मार्केट बूमिंग होता है, लोग ज्वाइन करते हैं, पैसा बनाते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने बनाया. आपने नहीं बनाया, मार्केट ने चल दिया तो आपके भी बन गए. जब गिरता है, और तब अगर आप सस्टेन कर पाते हो प्रॉफिट्स को, और आपका लॉस नहीं होता है या लॉस कम होता है, दैट मीन्स यू आर एन एक्सपर्ट. अदरवाइज व्हाट हैपेंस टिपिकली इज व्हेन द मार्केट गोज अप, एवरीबडी मेक्स मनी, एंड व्हेन इट गोज डाउन, मोस्ट ऑफ देम लूज ऑल द मनी, प्लस घर का भी पैसा जाता है. हमने ये तो क्रिप्टो करेंसी के साथ भी देखा है. परफेक्ट. अब सारे लोग कहते हैं, मैंने कुछ ट्वीट पढ़ी थी किसी की कि यार बस गाइस अब 2024 के एंड तक के उसका वेट करो, तब तक होल्ड करके रखो. तो मैं जरूर ये किस तरह की बात है? लाइक बट दिस इज अ, यू नो व्हाट इज दैट व्हाट यू जस्ट सेड, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं होप. सो होप पे कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग यहाँ पे. यहाँ वो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि होप पे नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है. एंड दैट्स व्हाट माय लर्निंग कर्व वाज. Between after that loss which I incurred in 2001, where I lost all my 20 plus more, then I realized कि मुझे सीखना है. अभी एक बार बनाया तो ये समझ में आ गया कि बन सकता है, लेकिन मैंने नसीब से बनाया, बट अब मैं स्किल से बनाऊंगा. So between 2001 to 7, like 6-7 years, I started going deeper into analysis, technical as well as fundamental. मैंने पूरा fundamental समझने के लिए finance MBA भी किया नरसिंह मौंजी कॉलेज से. So I understand fundamentals. I now read books and courses on technicals. देन आई डिसाइडेड कि दोनों में से एक चीज़ करना है, तो टेक्निकल ज़्यादा आसान है, और वो आसान मतलब कोई भी कर सकता है. फंडामेंटल क्या है कि बैलेंस शीट पढ़ना है, कंपनी का रिपोर्ट्स पढ़ना है, एक आम आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है मतलब फंडामेंटल करना. टेक्निकल क्या है, चार्ट्स को देखना है, ग्राफ को देखना है, जो एक हम लोग अभी जो सिखाते हैं 15 साल से लोगों को. उसमें कितने सारे ऐसे भी है, ऊबर ड्राइवर से लेके, वॉचमैन से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके, होम मेकर से लेके, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, किसान भी है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स. एंड वी आर इन सच डेंजरस ट्रिकी टेरिटरी हियर. पैटर्न्स,
मतलब अब आप 1992 का स्कैम देख लो, जो वो हर्षद मेहता की आई है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में रोमांटिक एनालॉजीज बनाते हैं। तो जब हम पैटर्न देखने की बात करते हैं तो लोग कुछ एड़ी तिरछी चीज़ पढ़ के ऐसे बोल सकते हैं हमने पैटर्न डिटेक्ट कराया, लाइक व्हाट? I don't think there is a science to detecting a pattern, or is there? No, there is pattern to everything. In fact, if you listen to Tony Robbins, who is one of our coaches, motivational mindset, business. So he says that the one skill which you need to scale up in any area of your life is to pattern recognize. Recognize the pattern, follow the pattern, and if the pattern changes, you also have to change. And that applies to every business. Like for example, what you are doing right now, you identified a pattern which is podcasting. Early on, and you started, so you are able to scale. Now let's say we were into physical events, जैसे हम लोग physical events करते थे 2014, 15, 16, 17 में, होटल मुंबई, लेके फिर अब जाते थे, हाँ, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, सब जगह पे इवेंट्स कर रहे। फिर कोविड हो गया, तो अभी पैटर्न बदल गया, तो हमको लगा सबके फिजिकल इवेंट्स वाले बिजनेस बंद हो गए। सो टोनी रॉबिन्स का एग्जांपल लेंगे कि उनका भी प्रोग्राम होता है UPW, अनलीश द पावर विद इन, विद 15,000 20,000 पीपल इन द स्टेडियम एंड वो जंप करते हैं। हाँ, और वो भी बंद हो गया। तो अभी उन्होंने क्या किया कि जूम वाले को फ़ोन किया, भाई मेरे को ऐसा स्टूडियो चाहिए जहाँ पे 15,000 लोग जूम पे दिखे, जो पहले था ही नहीं। तो वो सेटअप बनाया, तो उनको हमने देखा, बोला अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा भी एक स्टूडियो बनाया हमने कोविड के बीचों बीच। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और पैटर्न को फॉलो किया रातों रात। जो हम 300, 400 या 500 स्टूडेंट से करते थे फिजिकली, अब हम 3,000, 5,000, 7,000 स्टूडेंट से करते हैं। So this is for every business. Now what is the new pattern is AI. You need to learn, you need to master it, you need to apply it so that you can go ahead of the curve. So pattern होता है स्टॉक मार्केट में भी है और बाकी लाइफ में भी है. And even for human beings, like you understand your wife, your husband, your kids' patterns, that how they behave. So accordingly, you also behave, right? So everywhere pattern works. So that is one thing which I learned, and that is helping me not only in business but also in trading also. जैसे नसीम निकोलस तालिब का आपने ज़रूर एग्जाम्पल सुना होगा, Black Swan, है ना, ब्लैक स्वान। तो अब आजकल के जो नए इंटेलेक्चुअल आए हैं वो किसी भी कोई चीज़, कोविड को ब्लैक स्वान बोल देंगे, किसी और चीज़ को ब्लैक स्वान बोल देंगे, राइट? वेयर लाइक दिस पैटर्न रिकग्निशन फेल्स, राइट? right? सो व्हाट वुड यू से टू दैट कि अब मैं बैठा हूँ एंड मैंने बोला कि चलो ठीक है, आई एम anywhere from 18 to 34 or even more. I have some money on the side, I have an active income. अब मुझे क्या है कि I want to be in stocks. मेरे जो डर थे वो ख़त्म हो गए उसको लेके, and I start. And अब मैं बोलता हूँ कि अच्छा मैंने 5 साल का ग्राफ देखा है, ये कंपनी तो ऊपर ऊपर जा रही है, इसमें पैसे लगाता हूँ। मतलब आई एम सेइंग फ्रॉम अ वेरी लेमैन स्टैंड पॉइंट, लोग ऐसे ही सोचते हैं अक्सर, Right. सो हाउ डू यू गो फ्रॉम दैट to detecting the pulse of the market? Is it some kind of an education? Yes. So there is a proper science to it, like I believe that, and of course साइंस तो है लेकिन उसके साथ ट्रेडिंग करना अपने आप में आर्ट है। अब दोनों को अगर मैं मिक्स करूँ तो मेरे पास एक जो हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क है, पैटर्न, हाउ टू ट्रेड द स्टॉक मार्केट। लाइक फर्स्ट यू नीड टूल्स, लाइक वी फॉलो टेक्निकल एनालिसिस, नॉट एनी फंडामेंटल एनालिसिस, जस्ट टेक्निकल। सो टेक्निकल में टूल्स होते हैं, आपने सुना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस और वो सारे टूल्स, और जिससे चार्ट बनता है, ओके, राइट, दैट्स टूल। और टूल्स पे से हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम इज कि अंडर सर्टेन कंडीशंस यू आर गोइंग टू बाय, if this happens I'm going to buy, if this happens I'm going to sell. And what are these conditions? क्या वो numbers होते हैं? Numbers होते हैं और वो एक criteria होता है कि for example कि एक candlestick pattern है. You must have heard about candlestick pattern. There are different candle, you must green and red candles you can see on the chart. हाँ. Those are called candlestick patterns. मैं तो I could not read what they meant. Doesn't what matter. आपने बताया, हाँ. हाँ, so वो candle patterns में हर एक पैटर्न होता है। समझो कि there is a bullish pattern. So what is the rule is that you have to buy above the bullish pattern and sell below the. What do you mean by above bullish? Above means let's say a candle pattern is between 100 and 110. This is one day. आज का भाव जो है ये कैंडल बना 100 और 110 के बीच पे। अब कल ये आज ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन मतलब इट्स अ बुलिश कैंडल, आज बाइंग हुआ है मार्केट में, तो कल मैं ये कैंडल के ऊपर बाय करूंगा 111 में, बिकॉज नाउ द बुल्स आर कंटिन्यूइंग टू गो अप, so I will go even above them. yeah. So I'm going to buy at 111. Now if the bulls fail, there are two people, bulls and bears, who is in control by looking at the charts or the patterns. Now if the bulls are failing and bears again take over, what will happen? It will break 100 below the price of 100. So what is my entry is 111, 111. What is my stop loss? What do you mean by stop loss? Which actually means stop the loss. कि अगर 100 के नीचे गया मतलब बुल्स हार गए
और बेयर्स ने जीत ली है, तो अगर बेयर्स मार्केट और नीचे लेके जाएंगे तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो मेरे को 10 रुपए से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके नीचे तो बेयर टेरिटरी है। तो मैं 100 रुपए के नीचे 99 हाफ में मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मतलब मेरी एंट्री हो गई 111, स्टॉप लॉस हो गया 99.5 और लेट्स से 100। सो आई नो 11 रुपीज आई एम गोइंग टू लूज। नाउ आई एम ओके विद दैट। If I'm okay with that, then only I'll take that trade. Okay. So let's say I can afford 1,000 rupees. So I'll take accordingly number of shares. Or I can afford 10,000 rupees. So I can buy 1,000 shares. So I can lose 10,000 And rupees. how do I know what is my loss appetite? On your capital. Let's say, okay, let's do it that way. This lesson I learned in the start of my career, and that helped me to stay afloat here so far. अभी तक मैं इसलिए जिंदा हूँ स्टॉक मार्केट में क्योंकि वो लेसन 16 साल के उम्र में ही सीख लिया था। ठीक है। तो वो बहुत बार मैंने अपने पॉडकास्ट पे बताया और वो अभी ट्रेडमार्क जैसा हो गया है। तो उसमें क्या था कि मैं जब जाता था वो स्टॉक मार्केट के ऑफिस में मेरे अंकल के साथ, वहाँ पे वो ऑफिस में 50-60 लोग ट्रेड करते थे, सब बाय सेल। तो वहाँ पे एक ओल्ड अंकल थे जो काफ़ी सीनियर और एक्सपर्ट माने जाते थे, जिनसे लोग एडवाइस लेते थे। उस ओल्ड अंकल ने मुझे एक बार बुलाया कि भाई बेटा इधर आ। बोला क्या कर रहा है इधर? मैं बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है तेरे को क्या लगता है कि इन लोग पैसा बना रहे हैं? बोला हाँ आप ही तो एडवाइस करते हो। बोलता है नहीं, इन लोग एडवाइस लेते लेकिन मानते नहीं हैं, और ये अगले साल नहीं रहेंगे, लॉस करके चले जाएंगे, नए लोग आएंगे। मैं यहाँ पे 15 साल से खड़ा हूँ। एक ही प्रिंसिपल है, तेरे को मैं गोल्डन रूल सिखाता हूँ, अगर तू सीखेगा तो तू लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। बोला बताओ क्या है? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, लर्न टू बुक अ लॉस। एक्सेप्ट कर लो, ह्यूमन नेचर के खिलाफ है ये। परफेक्ट। हम लोग क्योंकि रिस्क अवर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। लर्न टू बुक अ लॉस। लॉस अवर्स। वी लेट मी जस्ट ब्रेक दैट। हम गेन नहीं कर सकते, हम लॉस नहीं कराना चाहते किसी भी तरह से। हाँ यस, तो मुझे वही सिखाया कि लर्न टू बुक अ लॉस। And the second thing what he said, it was very vivid in my mind still today. And every time I trade and when I lose money, I remember that, is that या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। This is the golden lesson of life. आपके सर में दर्द नहीं होता कि आप इतना अपने नेचर के विपरीत एक्ट करते जा रहे हो? वही तो that's what I see. I think that learning stock market and becoming a trader has become more spiritual to me. What is spirituality? The ultimate lesson of spirituality is what? Just focus on the process, not on the result. Yeah. Right? So आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मेरा कर्म क्या है कि मेरे को 111 के ऊपर खरीदना है और 100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 11 रुपया लॉस हो गया तो मैं उससे डरूंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट ही है। और ऐसे मुझे 10 ट्रेड करने हैं, 10 में से मुझे 50% ही राइट होना है। मतलब 5 में राइट, 5 में गलत। तो 5 में मुझे लॉस होगा, 5 में प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट जब होता है तब बड़ा होना चाहिए 10 रुपये से ज़्यादा। अगर 111 का 125, 150, 200 तक जाए, वैसे ट्रेड्स चाहिए। लेकिन लॉस हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये जो मैं इतने साल से सिखा रहा हूँ, उसमें एक ही चीज़ समझ में आया है कि पूरे मार्केट में हमारे कंट्रोल में है क्या। मैं कहाँ एंटर करूँ और मैं कहाँ लॉस बुक करूँ, मैं कहाँ प्रॉफिट करूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता 200 में ही बेचूंगा, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। राइट? तो वो तो सिंपल है। लाइफ का भी वही रूल है कि जो हमारे कंट्रोल में उसको कंट्रोल करेंगे। आप तो स्टोइसिज्म की बात कर रहे हो फिर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब स्टॉक मार्केट सीखने लगा और उसके पीछे लगा तो मुझे बहुत सारे लाइफ के लेसन, स्पिरिचुअल लेसन समझ में आए। और वही कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, ताकि व्हेन यू बिकम अ गुड ट्रेडर, यू नो व्हाट, बिफोर दैट यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। यू कांट बी एरोगेंट, यू कांट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, you can't have ego, because if you have all this, market will chop your ego into pieces and give it to the dogs. जो हिंदी में डायलॉग है, छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। That's the thing it's going to happen. I think this is so fascinating. Let's talk about that. जब आप 16-17 साल के हो, इस टाइम में आप में जुनून है कि यहाँ पैसे आ सकते हैं, नंबर ऊपर नीचे होते हैं। Yes. पर इमोशनल कंट्रोल तो नहीं है। हाँ. So let's talk about that journey of gradually unlearning again this human nature. मैं आज भी बताता हूँ, जैसे कि एक लंबा छोटा टेक्स्ट आएगा मेरे पास, किसी प्रॉब्लम का किसी ने मेरे को बताई है। मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स या तो ये होगा कि मैं उस पर तुरंत उसी रिएक्टिव एनर्जी से रिस्पॉन्ड करूँ, या मैं डिनाइल में चला जाऊँ। Right. मैं अपने इमोशंस को उस टाइम के जो दूसरा मेरे को भेज रहा है सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। Right. बट यूजुअली व्हाट आई हैव लाइक रेड अबाउट ट्रेडर्स और सीन, आई वाज इवन लाइक सेइंग निखिल कामत इज लाइक, यू नो, जो रिक्वायर्ड होता है आपके लिए ट्रेडर बनने के लिए वो बहुत डिफरेंट है ह्यूमन नेचर से, राइट? Absolutely. सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजुअली। आपके आसपास के लोग
कुछ हार्ट ब्रेक हो रहा है तो एकदम वो हो रहे हैं, खुशी हो रही है तो दबा के सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइक योर लेवल हेडेडनेस थ्रू आउट लाइक दीज ईयर्स. So this has come after so many years of experience. Of course, I have done a lot of blunders and mistakes, but this one lesson which I just told you is that cutting the finger or the hand is very important. तो मैंने पहले बताया था tools. Second, I said trading system, which I explained you the candle pattern and all. Third is the risk management. मुझे पता है 11 रुपए का रिस्क है. अब मेरे पास 1100 रुपए है या 11,000 है या 11 लाख है, वो मेरे को डिसाइड करना है मैं कितना लॉस कर सकता हूँ. एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द पजल इज व्हाट यू सेइंग इज इमोशंस मैनेजमेंट. राइट, एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इमोशंस. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, so we have to deal with emotions. So now I can use my emotions to my advantage or disadvantage. Right? What's an example of that? So अगर process driven हो गया कि मेरे को इसके ऊपर buy, इसके नीचे sell, इसके नीचे stop loss, then the more objective rules are there, that much less emotions you'll have. अगर मैंने बहुत ओपन कर दिया, चल ले लेते हैं देखते क्या होता है, ये देखते हैं क्या होता है, नहीं करना. बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. बिफोर आई बाय वन सिंगल शेयर इन द मार्केट आई शुड नो वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट इन अ लॉस. और आप फोन पे लेटे लेटे 2 बजे ऐसे नहीं बाय करते कि नहीं, चलो जैसे लोग करते हैं यार चल 10,000 रुपए इसमें लगा देते हैं ऐसे. नहीं नहीं नहीं, जीपे उस पर डाल के. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ट्रेड नहीं होता है. ये जब हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट चालू है और मेरा ट्रेडिंग भी चालू है. एंड देयर इज अ टीम ऑफ ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग फॉर मी एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडर्स बिकॉज दे नो वेयर टू सेल एंड वेयर टू बाय. देन ओनली आई कैन सिट हियर एंड टॉक. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव हो गया. जैसे आप, मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर पैसा कमाते हो. तो स्टॉक मार्केट क्यों ऐसा किसी ने बोल दिया तो कल खरीद लिया आपने फ़ोन करके, भाई ले ले, ऐप पे डाल लिया, डाउनलोड कर लिया, बाय कर लिया. सो दैट्स गैम्बलिंग. सो इट इज़ अ गैम्बल फॉर पीपल हु टेक इट एज अ गैम्बल. It's a business for people who do it as a business. For us, it's a pure business. Like you have your business, I have my business. And there are losses, there are profits, but we have to make sure that profits are bigger and losses are smaller. Which is the rule of business. That's the rule of business. That's like any other business. Yeah. Or the best part is, you know what? The loss is in your control. कभी भी आप 100 में खरीद के ऐसा 0 तो नहीं होता है दूसरे दिन. वो धीरे धीरे 99 होता है, 97 होता है. तब आपको समझना चाहिए भाई कि मेरे को उंगली काटनी है. बट दैट्स वेयर द ईगो कम्स, दैट्स वेयर द नेचर कम्स, वेट वी आर पूरा विपरीत है हमारा नेचर, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है हार नहीं माननी है. राइट, आशा अमर है, होप फॉर द बेस्ट, और ये सारी चीजें हम मार्केट में लेके, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चलती है मार्केट में. यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी टेकिंग योर डिफीट एंड यू हैव टू लर्न द लेसन. फिर आप कहीं तो करते होगे, जैसे मैं आप कंपेरेटिव बैडमिंटन में हो जाते होगे, क्योंकि लाइक इट इज सच अ, फॉर मी हु इज ऑन द अदर साइड, आई कांट प्रोसेस constantly learning so many lessons from the market and learning to quietly deal with your emotions. Like it must be an outlet for it elsewhere, no? So there is what you are saying is there is a human need for variety and yes, spice. Activity. Yes. कि मेरे उस पे numbers है, अब मैं खाली बैठूं, छेड़ू तो इसे थोड़ा सा. Exactly. तो वो spice और variety और जो चाहिए हमको, वो आप वो मैं इवेंट्स में करता हूँ, सेमिनार्स में करता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, बिकॉज देयर आई ट्राई टू डू अ न्यू कॉन्सेप्ट और अ न्यू स्टफ और अ न्यू एक्टिविटी विच फुलफिल्स माई नीड फॉर स्पाइस, और आई गो टू अ exotic location for a vacation or a normal location. Or have some great food, whatever. So whatever spice you want in life, don't do it from the market. Let the market be boring, right? Yeah. You take any big business in the world, anything which has flourished like anything, all those businesses are boring. Yeah. Let's take McDonald's example. McDonald's is super boring. Super boring. That you try French fries in Mumbai, Borivali or Churchgate or in Delhi, it's going to be taste the same because it's process driven, right? It's just, that's how it is able to scale up, right? That the only thing you can scale up is when it is systems and process, and systems and process are boring. So it has to become boring. I think लोगों के अंदर, especially like when you're young, there is a need to look like a hero. Absolutely. Right? There is a need to look like a glamorous earner of money. Yes. No, ग्लैमरस नहीं. अगर आपका क्लियर हो जाए ना विजन कि मेरे को पैसा बनाने का, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि बोरिंग ही होना चाहिए. मेरे को हीरो किधर और बनना है. कहीं आप जो बोल रहे हो बैडमिंटन खेलो उधर हीरो बनो, क्रिकेट खेलो उधर हीरो बनो, बट स्टॉक मार्केट में हीरो बनोगे कोई जगह नहीं है. इट्स नॉट टिपिकल हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी वेयर वन पर्सन विल हिट 20 पीपल, राइट? तो और ये ह्यूमन नीड कहाँ से आती है पता है? जैसे हम लोग पता है, अगर आप ये समझो कि इंडिया और
केनिया का मैच हो रहा है या अफगानिस्तान का, जो वन इज अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड वन इज अ दिस थिंग. When it comes to India, we are going to always think India is going to win, whether it's strong team or losing team. That's again emotion. But let's say ऑस्ट्रेलिया और केनिया प्ले कर रहे हैं, तो आपको पता है कि विनिंग कौन है? ऑस्ट्रेलिया. बट अंदर से ऐसी इच्छा है कि केनिया जीत जाए, अंडरडॉग पे लगाना है. ये प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में होता है. क्या पता है कि जो गिर रहा है ना, उसको पकड़ते हैं. Yes Bank, you know, everybody knows Yes Bank story. Of course. The highest price around 400. People didn't lose money at buying at 400. People lost money when it started coming down to 300, 200, 100, thinking that now this is an underdog, it should perform. Because ये सस्ता मिल रहा है, खरीदो इसको. And then it went to 20. That's human psyche. ऐसी दीवानगी और पागलपंती क्यों है स्टॉक मार्केट में लोगों के अंदर? See, that one is the human nature, what we explained, and the second is that shortcut thing that, oh, because I think that, oh, अब 200 से 100 हो गया तो 100 से 200 भी जल्दी हो जाएगा, and that I have seen people who are chartered accountants who are well educated in finance. They do this silly blunders thinking that मेरे को पता है. You are expert in chartered accountancy or you are expert in being a doctor. That shows that you are an expert, but that doesn't mean you are an expert in stock market. So educated people do so many blunders in the stock market. Forget about those people who are not aware about or any education or that. That's why it is very important for you to educate yourself in stock market as a profession, as a business. Like you do any other business, you study the business, you practice it, and then start making money. So before I came here, I actually spoke to a bunch of young people to understand कि वो लोग कैसे करते trading, because I know there's lots of young traders in my own team, right? Like who are very fascinated with the idea कि आप college वगैरह में आपको थोड़ी और income हो जाएगी stocks के through. तो most of them said कि हमने eventually फिर छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा यार कि एक तो पूरे दिन मगजमारी करनी पड़ती है, सुबह मार्केट देखो, रात को मार्केट देखो, फिर आपने मुझे बताया technical analysis. I learned of the term like a few days ago only. Okay. फिर हमने कहा कि यार इतनी मेहनत तो हम एक stable job रख के रख लेते हैं, हमें क्यों करनी है इतनी मेहनत? So it's not about मेहनत, मतलब एक बार चीज़ समझ में आ जाती है. जैसे अभी आप बोलोगे डॉक्टर भी तो 4 साल मेहनत करता है पढ़ाई करने को, बट बाद में उसका काम धीरे धीरे आसान हो जाता है कि वो कंपाउंडिंग हो जाती है. हाँ, बट देन ही इज लाइक फॉर 1 hour ऑपरेशन ही कैन चार्ज यू 10 lakh rupees. So while you are learning the stock market, of course you have to spend time, of course you have to give the kind of energy and effort which is needed, but then once you master it, then it's all about like okay, buy कर ले, सिस्टम बन गया है, मेथड है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल है, right? Then it's okay, then I don't need to do anything, I just need to put my orders and I always recommend, like people think that I'm suggesting to, I have a 1-year course where I teach people right from basic to becoming a trader, but that doesn't require to leave everything. मतलब आपको सब छोड़ छाड़ के नहीं करना है. We call it like a parallel income. आप जॉब भी करो, बिजनेस भी करो, आप जो काम कर रहे हो करो, उसके साथ साथ करो. Because मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, which is more of a like a drug for most people. Intraday trading, you must have heard like आज का आज buy किया sell किया, which is like it exactly works like a drug because it gives you that instant dopamine. It gives you that instant gratification, which we don't recommend. You should not be doing that ideally especially if you're new, right? Because you have not understood the game. जैसा है कि आपने कभी रणजी क्रिकेट या टेस्ट मैच भी नहीं खेला, सीधा 2020 में गए, right? So that's like intraday trading. So first understand the game, do long term, then do medium term, start with one share, do like mock trading, like paper trading, and then get into the business. That's how every business works. So you're suggesting that if people go into the stock market, they should become long-term investors and learn to sit with the stocks. Long term, when I say long term, it's not like super long term, like 10 साल 5 साल वाला scene नहीं है, क्योंकि the world is changing very fast nowadays. It's dynamic, plus you have global markets and everything has come so closer. So for me now, the long-term definition has changed for everyone almost in the stock market. But what was it before? पहले था ना, जब मैं join किया था 2000 around on those years 2000 2005 and all. Before that also people used to say अरे ये stock ले 10 साल के लिए रख, काम आएगा, 20 साल के लिए रख, तेरे बच्चे की शादी हो जाएगी and all that stuff. But now you've seen in the last 10 years so many things have changed. Technology, innovation, AI, right? Something which was there 5 years back, 10 years back is not there anymore. Or something which is going to be there, it's not even existed right now. So look at something like social media or something, all this technology thing. So I think long term होना चाहिए, लेकिन short term reviews करना पड़ेगा. I see. Because things change very fast, right? So for me, the long term definition right now is between 12 to 24 months, right? That's long term.
and उससे medium term 3 to 6 months, and then goes into short term, which I don't recommend. I don't see, because उसके लिए आपको actively करना पड़ेगा, और वो actively आपको stress देगा, आपका वो काम भी बिगड़ेगा, ये काम भी बिगड़ेगा. So I don't recommend that intraday trading or that kind of, especially for new ones. So what's the idea? How have you seen your personal income, your own portfolio fluctuate? कितने dangerous level तक वो fluctuate हुआ है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार क्या कर रहा हूँ मैं ये? पहले बहुत होता था, मतलब of course that was the start, but as we gradually understand risk, one, second, you have more responsibilities. Like when I started, I was 16. So that was a blind kind of a thing. You take risk blindly and all that. But then you have responsibilities. You get graduate. You get married. You have kids, and then you have businesses also to manage. So you can't take that blind risk. And now now I understood that this is so much simple and easy. I spend rarely any time on trading right now because it's all system based. Team is there. People are there. I just have to put some orders, instruct them, and I am traveling. I'm doing my programs. I'm doing my events. I'm busy. And money is being made, and that's what I now teach people, that you don't need to leave everything and trade. आप अपना ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, आप खाली स्टॉप लॉस को कंट्रोल करो, आपके उंगली को कंट्रोल करो, मतलब आपका लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट तो मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करेगा, राइट. सो दैट्स हाउ वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ. सो जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट दैट मेनी पीपल से दैट यू मस्ट हैव नोन दैट डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस, and there is a report which says, official report which says that 89% people lose money and 11% make money. So that's not a very encouraging report. And people say futures are risky and dangerous. But last year, which is 2022, I took part in an investing championship in US, and I was in that only futures and options category. And because I trade that most of the time, and I stood fourth with 81% return on my capital. And this year also I'm running around 60% right now, but it's still time to go. So not that I'm saying that futures is the best or options is the best. What I'm trying to say is, if you understand risk, then you can trade anything. If you don't understand risk, then everything is dangerous. Even equity is dangerous. Anything. If you don't know swimming, you jump in 20 feet water, it's dangerous. So something which you don't know is always dangerous, right? लेट्स अनपैक रिस्क हियर, क्योंकि अब क्या है, लोग सोच रहे हैं कि रिस्की का मतलब है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से जाके हेलो करने में, या मैं डरता नहीं. व्हेन यू आर सेइंग रिस्क, लाइक व्हाट डज द वर्ड रिस्क एग्जैक्टली मीन? इज इट अ न्यूमेरिकल वैल्यू? इज इट एन असेसमेंट ऑफ, लाइक आप जैसे बोल रहे हो कि हाई पॉइंट्स, बुलिश पॉइंट्स, बेरिश पॉइंट्स, एग्जैक्टली रिस्क है क्या? एग्जैक्टली रिस्क ये है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है और अगर मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, तो मैं एक ट्रेड पे कितना लॉस करने को तैयार हूँ. तो वो 10,000 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है. जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पास रूम ऑफ एरर कम हो जाएगा. अगर आप बोलो 1 लाख में लॉस करने को तैयार हो, तो आपका 10 ट्रेड में पैसा खत्म हो जाएगा. और 10 ट्रेड में खत्म होने से पहले 5 ट्रेड अगर लॉस हो गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. तब आप अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाओगे. तो हम लोग जो फॉर्मूला सिखाते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला, इट्स कॉल्ड 1% पर ट्रेड, 1% रिस्क पर ट्रेड. तो अगर मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूं, तो एक ट्रेड पे मेरा रिस्क 10,000 रुपए होना चाहिए. ये तो सही है, मतलब 1% इज रीजनेबल. हाँ, 1% इज मैनेजेबल, रीजनेबल, डाइजेस्टेबल, राइट. 10 लाख के अंदर 10,000 कम हो गए, तो मैं दूसरा ट्रेड लूंगा, तीसरा ट्रेड लूंगा, और 10 ट्रेड रॉन्ग होने के बाद भी मेरा 1 लाख रुपया नहीं जाएगा, 1 लाख रुपया जाएगा, which is I'm still holding on to my 90% of my capital. But 10 ट्रेड करने के बाद समझ में तो आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो रुक जाओ, अलग करूँ, मॉडिफाई करूँ, चेंज करूँ. So before you even can review your strategy or revise your strategy, you should have enough capital. बट अगर 10 लाख का सीधा 3 लाख पे आ गए, फिर आप स्ट्रैटेजी को रिवाइज करोगे, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है अभी ट्रेड करने का. आप तो बोल रहे हो कि 7 लाख तो खत्म हो गए. द मोर द कैपिटल गोज डाउन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज योर कॉन्फिडेंस. अग्रीड, राइट. सो मच. आपके बैंक अकाउंट में पता लग जाता है आपको कितने पैसे हैं उस पर. हाँ, तो अभी 10,000, खाली 10 लाख में 10,000 का लॉस हुआ, तो दूसरा ट्रेड आएगा तो बोला ठीक है चलो करते हैं. अगर 10 लाख में से 7 लाख हो गया, दूसरा ट्रेड आएगा, रुक जाए यार, अभी थोड़ा लॉस हो गया. So the trade which you mismanaged in risk not only affects that trade but also affects the next trade, because now next trade you are skeptical कि करूँ कि नहीं करूँ. तो ये risk management हो गया. What is the real definition of risk or stop loss is that if you hit the stop loss, you go to the next trade without getting mentally or financially affected, is called the right stop loss. Easy to say, hard to do. Absolutely, but that's how, if you want to succeed here, that's the golden rule. You must be dangerous at poker.
Yes. आप खेलते हो पोकर? बहुत कम, बहुत अच्छा। बट आई स्टडी बिकॉज आई डू विजिट कसिनोज हाँ। बिकॉज बहुत पहले बहुत सालों तक मुझे ऐसा बोला गया था कि स्टॉक मार्केट इज अ बिग कसिनो. हाँ. ओके, सो मुझे ऐसा था कि कसिनो में क्या है, तो आई डू विजिट कसिनोज, आई समटाइम्स प्ले ऑल्सो, और कसिनो पे बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है. अब कसिनो का एक गोल्डन रूल क्या समझ में आता है, दैट द हाउस ऑलवेज विंस, या. राइट? So what does house do different than the players to be winning side, to be always on the winning side? And that's a deep study. It controls the environment. No, lot of things. We actually have a whole list of things. Yeah, let's unpack it. Okay. So first thing, what the house does is they will only make you play the games which they can win. Roulette. Every game which is there in casino is statistically, mathematically, or the way it is being designed is having an edge for the casino and not for the player. So as soon as you enter casino, you have lost money. हाँ. And casino has got money. So that's the first rule. So अगर वही हिसाब stock market में लगा है कि you should play only the game which you can win, right? So what is the game which you can win? A yes bank going from 400 to 200 is not the game you can win, because the market is saying that I'm going down, you're trying to catch the bottom, right? You're falling knife, what we call it. But अगर मैं बोलूँ कि अरे अभी टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, और अपोलो टायर भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, मतलब और ऑटो सेक्टर चल रहा है, और पूरा इंडस्ट्री ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे जा रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बूम. सो व्हाट मार्केट इज सिग्नलिंग कि ऑटो सेक्टर अच्छा है, ऑटो स्टॉक्स आर गुड, आई शुड बी बेटिंग देयर. दैट्स द गेम यू कैन विन. Second, that's rule number 1. Rule number 2 is every table in the casino has something called as maximum bet and minimum bet. Correct. What is casino doing by that? Controlling the risk. हाँ. That no one person can win so much that everybody else loses is equal to that. So that's controlling the risk. Same thing here you do. You cut your finger, you cut your hand. Stock market. Third is you go to you deal with casino में बहुत सारे dealers होते हैं जो बहुत सारे games करते हैं. Correct. So those dealers are so well trained in dealing, giving coins, giving the cards and all that, and also fast, because they know that if they play fast, the more games they play, the more they win. Yeah. So being fast and being accurate, that's called flawless execution, right? Now, in stock market, how do you do flawless execution? When your system is clear that I have to buy above this, sell below this, objective rules. बट अगर मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, इसको फ़ोन करके पूछता हूँ अरे अच्छा है कि नहीं, टीवी चेक करता हूँ, न्यूज़पेपर चेक करता हूँ, बाद में एग्जीक्यूट करूँगा, दैट्स नॉट फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, दैट्स इमोशन बेस्ड एग्जीक्यूशन. सो दैट्स रूल नंबर 3. रूल नंबर 4, व्हेन यू गो टू अ कैसीनो एंड यू लुक एट द डीलर एंड यू लुक एट द प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं, अगर जीत रहे तो उन लोग चिल्ला रहे हैं और एक्साइट हो रहे हैं, ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, और कैसीनो ड्रिंक्स फ्री में देता है जानबूझ के तो वो मंगा रहा है ड्रिंक्स, और वो लोग और अगर हार रहे तो वो डिप्रेस भी हो रहे हैं, गाली भी बोल रहे हैं, राइट? डीलर अगर इन लोग जीत रहे तो डीलर हार रहा है, इन लोग हार रहे तो डीलर जीत रहा है, लेकिन डीलर के मुंह पे शिकंज भी नहीं है. Even when he gets the tip. Yes, that's called cool and calm temperament. Now, when I'm making money in the stock market, or when I'm losing money in the stock market, if I keep my emotions cool and calm, then all these 4 rules together, I become the house. Wow. Right? So these 4 principles, that's why I studied so much on casino, so that I can apply those principles in stock market, right? And I'm trying to do that, and that's whenever I follow these 4 rules, I'm winning. Whenever one of them is missing, either I get emotional, I don't do flawless execution, or I don't manage the risk, I lose money. Then I become the player. So you choose whether you want to be a casino or you want to be a player. I've played a lot of poker in the last 2 years, and I can say for sure, कभी especially with the addition of alcohol or like beginner's luck, कभी यार इंसान full tilt पे चला जाता है, Absolutely. उससे उसके ना bad principles cement हो जाते हैं. हाँ. अगली बार आता है और ऐसा भारी loss करता है that the third time someone calls him, it's like I don't want to play. Same thing. When you enter a market which is bullish, right, and you make money based on luck, and you learn the wrong lesson that I know this is how it has to be played,
And till the time you don't lose 10 times more money than you have made in this trade, you will not unlearn that lesson. That's what you just said. Yeah, it's like that Alex Hormozy quote. You will be poor unless you've learned all the lessons poverty has to teach you. Yes, absolutely. So, अच्छा एक चीज़ है because मैंने lot of my knowledge sadly about the stock market comes from a few shows that I've watched, right? Like थोड़ा सा Big Short देखा, थोड़ा सा ये Scam 1992 देखा, right? तो एक bears के बारे में बड़ा ऐसे एक वो होता है. मैं जानना चाहता हूँ ये bears पैसे कैसे कमाते हैं? So bears can make money, which is when they short the market. When short means like in derivatives, which is futures and options. If you expect the market to go down, which it does go down time to time, that time you can short. Means what does it happen is usual transaction कैसे होता है, आप यहाँ पे खरीदोगे और ऊपर जाएगा यहाँ पे बेचोगे, Profit कमाओगे, हाँ. right? अब derivatives में एक option ये है where you can expect the market to go down, and if it goes down and you sell first, and then it goes down and then you buy. So ultimately your selling price is higher than the buying price. Only Correct. the sell transaction has happened first and then the buy. Now use normal question, if you're layman, you will say कि मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं उसको मैं कैसे बेच सकता हूँ? Right? That's when the derivative contract comes into picture. Derivative contract says that आपको contract को buy और sell खत्म करना है before the contract expires. Whether you sell first or buy first doesn't matter. So you are not selling actual physical shares because you don't have them, but you're selling a contract, making a promise that I'll buy before the contract expires. So there you can go short. That's called short selling. And that's how people make money in the downtrend also. And why is it considered ethical in some ways? कभी-कभी हम ऐसे देखते हैं कि यार फलाने किसी बंदे को इसने शॉर्ट कर दिया, न्यूज़ में आता है, फिर लोग बोलते हैं कि बड़ा बुरा कर रहा है ऐसे. Like why is it? See, Abhi, now if you go into that angle of, let's say if the company is doing bad, Yeah. management is good, not good, or the product has failed, or whatever it is. See, they are doing their business. We are doing our business. My job as a professional trader is to take the opportunity to go long or to go short. If I get emotional कि यार इसको short करके मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ तो मैं अपने business पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, right? And everybody is doing their own business, and it's a cycle. It's not like you are feeling bad for someone or you are doing bad to someone. Everybody goes through a cycle. Now look at what happened in COVID. COVID happened. Everybody is suffering. What happened to the mask and the sanitizer guy? Gone. बड़े पैसे कमाए उन्होंने कोविड में. हाँ, तो they thought that इन लोग सफर कर रहे हैं और मैं क्यों इन लोग को, नहीं तो फ्री में मास्क देना चाहिए था मेरे को तो. हाँ. But then that's how the business works. No? Then you can't be emotional about business. You have to take where the opportunity is. The cycle will turn again. Those guys will make money, and the whole thing will work. That's Yeah, it's like, मेरे पापा वो कहते हैं बाबा है तो रेल में या जेल में. Like you will experience like fantastic periods of growth, and then you know like the market is so there are cycles of business, cycles of growth, cycles of downtrends, which you need to take care of. And if you can make money in both, that's great. तो जैसे कि deciding to let's say be a bull or a bear, is it temperament based कि यार मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो short करने का महारथी हूँ तो मैं उसमें लगूंगा. I think you should not tag yourself for anything. No? Because that's what like media often portrays. No, this is a big bull, this is a big bear. I know. But then that will limit your options. समझो मैं अपने आप को बिग बुल टैग कर दूं तो मैं खाली जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी पैसा बनाऊंगा, नीचे जाएगा तब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं. और वो बायस बन जाएगा कि मैं तो बोलूं तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ. अपने आप में कीप इट फ्लूइड, राइट? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हमको गिरगिट की तरह रहना चाहिए. कलर बदलते रहो, बुल से बेर, बेर से बुल. जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बुल, नीचे जाएगा तो बेर. दैट्स हाउ यू मेक मनी. यू आर नॉट हैविंग टैग्स लाइक मैं शॉर्ट सेलर हूँ या लॉन्ग हूँ या बुल हूँ या बेर. Who decided कि ये एनिमल्स ये represent करेंगे इस चीज को? That's a long story because the typical action of bulls and bears, they represent that bulls try to hit it this way and bears try to pounce on you like that. That explanation is there in that Scam series if you see. It's been a while, but like I remember कि भालू ऐसे तो पंजा जरूर मारता है और बुल like it tries to like जब हम उसका भी फुटेज देखते हैं ना, वो कौन सा वाला फेस्टिवल होता है स्पेन वगैरह में होता है जहाँ वो the red मारते हैं. Yeah. I'm forgetting the name, but they are very interesting. Got it. Wow. So I also noticed you use something called falling knife, right? तो ऐसे different analogies use होते हैं to understand like the way the market works. Lot of them. So the falling knife is something which is like going down, like Yes Bank example we are taking. It goes down and you try to buy a stock which is falling knife, it will hit you, right? So we should not try to buy a bottom, like you don't try to buy a stock which is going down. अगर common sense use करेंगे कि हम लोग कि कोई चीज़ नीचे क्यों जाएगी stock market में, मतलब कोई भी stock
क्योंकि उसके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू, कुछ टर्नओवर, कुछ सेल्स, कुछ प्रोडक्शन, कुछ तो गड़बड़ होगा इसलिए नीचे जा रहा है। तो हम ऐसे गड़बड़ वाले स्टॉक को क्यों बाय करते हैं? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है बचपन से, वी हैव बीन टोल्ड टू सेव मनी, डिस्काउंट, सेल, ऑफर, buy cheap. Whenever we buy, we try to bargain to get cheaper. Correct. And that mentality hurts in market because you're trying to buy cheaper a stock which is going down. Instead, if I tell you the stock which is going all-time high, like the lifetime high or the multi-year high, what does it mean? That the company is doing fantastic. The sales are good. The management is good. Even if you're buying it at like a very high price. What is very high? Like historically. Historically high, but what is very high? Nothing. It can go higher. The high can become higher, right? At least the market says I'm going high. You know, the biggest myth about stock market is that you need to predict the market. You don't. You just need to follow the market. Going up, buy. Going down, sell. You're not predicting अरे ये ऊपर जाएगा और इधर तक जाएगा. किसको भी नहीं मालूम है किधर तक जाएगा और इतना नीचे जाएगा. So you buy a rising stock and you sell a falling stock. That's simple rules. Very simple. You don't try to predict कि इधर तक ऊपर जाएगा और इधर तक नीचे जाएगा. That nobody knows, right? So don't try to predict the market. Just follow the market. Listen. You know, more than you. Suppose let's say I give this example that अगर stock नीचे जा रहा है और उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हो आप, तो मतलब क्या है कि आप stock को बोल रहे हो कि भाई ऊपर जा क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ. हाँ. Right, and that's not going to happen, right? Because you're not like a big FIR or like a big mutual fund where you can trend the market. Does that happen? If there are big what we call as trends are created by big traders and big what we call mutual funds and FIIs or whoever. And they can deliberately change the market? Not deliberately to that extent, but of course if you see that, let me give you this example. कुछ भी नया फैशन में आता है, right? Let's say for movies में जो film stars, let's say nowadays again the bell bottoms are in place. Right? In Punjab particularly, yeah. Yeah. So who will start wearing them first? Yeah. The movie stars or the cricketers, and then people will follow. Correct. Right? If nobody is wearing bell bottoms, you start wearing. First of all, you will not have the guts to do it. One, right? But you start wearing, you will feel very odd because you're feeling out of place. But once the movie star wears, you follow. Then you are trending. You are following the trend. Yeah. So naturally, we are following the trend. But in stock market, we try to do reverse. We want to be that underdog. अगर stock ऊपर जा रहा है तो follow करो ना. Who's creating the trend? The big traders. We can't create trend with our 500 or 1000 shares. Trends are created with lakhs of shares being traded and by a big trader, mutual fund, FII, DII, all those put together. And we are just a small fish in the market. Now, before I take this next topic, I want to say that अगर आपको मगरमच्छ के साथ रहना है पानी में या बड़ी मछली के साथ रहना है और आप एक छोटी सी मछली हो, तो the only way to survive with the big fish and the crocodile, you being the small fish, is to always stay behind them. If you try to come in front of them, खा जाएंगे. खा जाते. रोज कितने लोग मर जाते क्योंकि you are trying to catch a falling knife. That means the big traders are coming down and you are trying to go against. You will be, or the opposite also happens. If the markets are going up and you try to short the market, it's going to eat you because you are going against the big fish. You just stay behind. You will not be seen. Wow, it's human need for being a hero is like half the problems. यहाँ पे हीरो बनने का कोई स्कोप नहीं है. मतलब जब भी आप हीरो बनने का सोचोगे ना, दूसरे दिन आपको लॉस होएगा, आप वापस ज़मीन पे आ जाओगे. और ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है. सो नाउ either you learn the hard way or you learn it before it, right? So if you learn the hard way, you lose money also and then you learn the lesson. And that's why when we teach people that not everybody needs to go through the same learning curve what we have gone through. So you learn from us. That's why we do trainings and coachings, and that's nowadays it's so much vibrant. But at the same time, one problem what I face right now is, now after COVID especially, there are a lot of finfluencers, right? Now finfluencers, nothing wrong, nothing bad about it, but there are many who don't know anything. They must have read a book or they must have seen a couple of videos and just started. Or they must have seen what is trending on finance right now. That's the worst part about it. I've seen some comedians and some other podcasters who never do stock market. Just because it is trending, they started doing it. On their own, not on even their own. With a guest. No, Yeah. I've seen, and I like, what is he talking?
राइट. अगर मैं अभी कॉमेडी शुरू कर दूं या मैं कोई और टॉपिक शुरू कर दूं just because it is trending, what is it happening? See, the issue is posing and using scripts to pretend like you're an expert Yes. is the easiest thing to do right now. It's how you scale. Yeah, but over a period of time, you know what? Most people can see through, Yeah. right? What you're talking, how you're talking, right? But still, there are some gullible people who get caught up in all this and they take wrong decisions and lose money and all that. So, of course, now things will get more streamlined with more regulations coming Yeah, up. But one thing I've also noticed is people who have had massive success in one industry take a very long time to actually start making content because कुछ साल तो वो अपने आप की ही धन बटोर रहे होते हैं, अपनी वेल्थ बना रहे होते हैं. perfect. अगर आप पहले ही साल आपने मतलब 500 रुपए कमा लिए, जी मैं आपको सिखाऊंगा 500 रुपए, आप कैसे कर सकते हो? You need to go through all of the cycles of making wealth, Yes. get exhausted, figure out a system and then go, now I can teach the world. Absolutely. कोई भी अगर आप standard rule of what we have learned since so long is that if you want to become an expert, either you give 10 years or 10,000 hours, right? So most people who look doesn't 10 even hours. look 10 hours. 10 hours, 20 hours. 3 master class देखी. Yes, I also know. Yes. So that's the sad part of it. But once it is regulated, I think only the experts stay. And even if it doesn't happen, but it's then up to the public, like whom to watch, whom to follow, whom to look at it, and whom to ignore actually, because that otherwise it's an open thing. Yeah. I have 3 very interesting directions to take from here. तीनों बहुत ही interesting है इस sense में कि सबसे पहले I want to know something about money from you. मैं जिससे भी बात करता हूँ, I'm interested to see how once they build their wealth, their opinions around money, their beliefs around money change. Yes. तो आप देखो आपने अपना you're self-made in a lot of ways, right? तो जब आप when you were growing up, what were your beliefs around money? And this could be passed on from your parents. जैसे Yes. ऐसा होता है कि अब एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर ऐसा बोलते हैं कि भाई बचा के रखो, सेफ्टी स्टेबिलिटी पे फोकस करो. एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होता. कुछ गुजराती कम्युनिटी के अंदर इनेट होता है पैसों की नॉलेज, ऐसा बोलते हैं. यू नो वन ऑफ द स्टीरियोटाइप्स इज देयर. कई बार ऐसा होता है कोई बहुत अमीर बाप का बेटा या बेटी होते, दे आल्सो स्क्वांडर द वेल्थ बिकॉज दे ओनली सीन द अपसाइड्स नॉट द डाउनसाइड्स. सो गोइंग फ्रॉम ऑल द वे टिल चाइल्डहुड टिल नाउ, आपने कौन से ऐसे मनी बिलीव्स को अनलर्न कराए यहाँ पे आने के लिए? बहुत सारे एंड एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम होता है दैट्स कॉल्ड एनीबडी कैन ट्रेड. सो एनीबडी कैन ट्रेड इज अ 3-day वर्कशॉप जिसमें पहला दिन हम लोग यही काम करते हैं बिलीफ्स पे. Okay. क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग सिस्टम्स जो बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटे में हो जाता है. बट एक पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाली मनी बिलीफ्स को चेंज करते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत सारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, नोइंगली अननोइंगली. लाइक व्हाट? लाइक लेट्स से कि पहले से बताया कि पैसा बचाना चाहिए. हाँ. One. Second is you have to work 8 hours, 10 hours, 12 hours to make good money, right? So that's not true. Once you do business, let's say let's give me an example. Like let's say the one person who's having a big hotel, like a 5-star hotel, right? There is a sweeper, and then there's a what do you call hospitality staff. Then there's a manager. Then there's further, and the owner. Who's working the hardest? The sweeper. And who's making the most? The owner. So that is a myth. Yeah. One could say the owner is thinking, oh, strategically brain बहुत लगा रहा है वो. वो तो है, but that's called smart work. Yeah. Right? That's one thing. Second is that study well, get a degree, get a job. That's not going to make you a fortune. Right? There's a Jim Rohn quote which says that formal education makes you a living, self-education makes you a fortune. Right? So my formal education, MBA Finance, Diploma in Sales, Chartered Market Technician. Meghna's 3 degrees, LLB, CS and Chartered Market Technician. These 6 degrees can only run my house. But to Like build household expenses, bus. maybe slightly more, maybe I can have a good car or maybe good house. But to build a fortune or an empire or to build this company where we are right now, it's the last 10 years, we spend like a mini fortune on learning things. Masterminds, courses, mentors, seminars, workshops, continuously. And that's how we are able to build it. That's self-education. Nobody forced us, nobody told us, because we wanted to. Right? So that's that's why it's called self-education. It's not like a school or college, we are forced to go. Right? But if you want to build wealth, if you want to have a fortune, you need to work on yourself. And it's a continuous process. It never ends. You think that school, college done, that's education is done. No. That's already obsolete education which you are learning. Almost. Right? No finance, no communication. Number two biggest skills which you need in life.
One is communication and one is finance. Both are not taught. 2-3 बच्चे याद है जो डिबेट्स में हमेशा बोलते हैं. The rest of them are not even given a chance. Yes, right. So that's what. In fact, we are working on a project right now with a major company where we want to build a program for teenagers to teach them about personal finance at an early age, like when they are like 9, 10th, 11th, 12th. In fact, we did a trial program also some time back. It was a big hit. And we don't teach them to trade and make money. We teach them about what is the importance of saving versus investing versus earning versus spending. What is the difference between a need and a want? You know that 7 out of 10 iPhone 15s are on EMI right now. I know that. I've seen it in front Yes. of me several So what does times. that mean? That the current, especially the young generation, is behind instant gratification. Whereas you don't need an iPhone 15 right now. Even you and me who are into this business of social media and podcasting, even we can do I without. saw your phone. Yeah. मैंने आपका phone देखा. And it's not the latest one, right? So what is the need? Why they are going for instant gratification, right? If they could understand this, that I need a phone, and I don't need a latest phone. The phone which I want versus the phone which I want and versus the one I need, there's a gap of 50,000 rupees. This 50,000, if saved and then invested properly, can make you a lot of money in the next 5 years. By the time you really need a big one, Yeah. and then you don't need to buy on EMI. Then you just have money. for Yeah, it. so that is the one. That's one thing which is very close to my heart, where we are working right now on young investor, right? Because what I understood that the money lessons, what you just told me, that बचपन से जो beliefs थे, वो बहुत टाइम लगे वो कचरा साफ करने को और उसको अनलर्न करने को. बट अगर पहले से ही अगर किसी ने सिखा दिया कि ऐसा सोचते मनी के बारे में, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, सेविंग माइंडसेट, इन्वेस्टिंग माइंडसेट, देन यू कुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर मेनी पीपल, फॉर अस ऑल्सो. सो आई वांट टू डू दैट फॉर माय किड्स, एंड I have a son who's 14 who already has attended some of my programs. He already has a basic investing kind of a strategy. But then I want to bring it to more kids. So that's why we're working on that. What about spending on lifestyle and leading a good life? You spend anything and everything, whatever you want. Splurge it, but on your passive income. मतलब you आप एक्टिव इनकम करो, काम करो, पैसा कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, उसमें से जो पैसा बनेगा उसको स्प्लर्ज करो. ऑन टॉप जो हल्का सा बनेगा, जो भी बनेगा वो धीरे धीरे कंपाउंड होके बहुत बनेगा. हाँ. फिर शायद आपको काम करने आपने कंपाउंडिंग देख लिया मतलब. हाँ, क्योंकि बाद में काम करने की भी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन वो स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, उतना टाइम बिताना पड़ेगा. सो you'll have to have something. What I use in my programs is forget about instant gratification and start using delayed gratification. ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को अभी सक्सेस या अभी पैसा या अभी रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन मैं अगले 2-3 साल मेहनत करने को तैयार हूँ, तो मैं बाद में करोड़पति बनूंगा. आपने तो हमारे बहुत व्यूअर्स को नाराज कर दिया है बात बोल के कि 21 साल पे मिलियनेयर नहीं बनने वाले वो. नहीं बनने वाले, बिल्कुल नहीं बनने वाले. सो आई विल वेरी क्लियर एंड अपफ्रंट and don't even think about it. And if you become also, it more or less like I also became almost like a millionaire when I was 20. So in terms of rupees, but it was a myth. It was an illusion, and it was a very and went away. And it was very tough to come back, right? Because पैसा नहीं होना अलग बात है, लेकिन होने के बाद गवा देना is worst thing you can. Yeah, because you've tasted the riches. Absolutely. Suddenly आप बोल रहे हो अब तो ताज सहारा होटल में मैं ही जाऊंगा, and suddenly you're like, Yes. So it's okay to have you extend your goal. That whatever goal, let's say you have put a goal that you want to be a millionaire by 21 or 25, make it 28, 30 or 32. Still you have like more life than most people who will be in that stage. So that's one lesson which needs to learn. I think the issue also is, and this is online, कि जो भी एक survivorship bias होती है ना, 4-5 बन गए, 25 के, 22 के, 21 के, and they're very loud because you know it's such a privilege and you're young, you want to share your success with the world. तो उसी को टेम्पलेटाइज करके दुनिया में बताते हैं कि आप कैसे बन सकते हो. The rest of 21-year-olds believe, oh, this is very possible. Yeah, but then you have to be what we call, there's a thin line being practical and optimistic and over optimistic. One, then it's not only the thing what they did, it's also the environment what they were provided. Luck. Would luck also play, or maybe at the right time at the right place? Let's say
let's say for example Facebook was started in those years. Now if you try to start another Facebook right now, it might not work because it's not the right time. There's something else which can be done. So you can't take that as a template because you don't consider that only one person. You consider the circumstances, the era which they are in, the support system, and the technology at that time, and maybe family members, and the belief system also works in that. So that's it's not, you can't take it out of context. Got it. Yeah. What I'm wondering is, since you've seen so many people and you teach so many people, right, how to trade, कोई ऐसे लोग होते हैं innately कि जो पैसा बना नहीं सकते, कि मतलब यार ये तो इसके तो पता नहीं क्या ही दिमाग में है. बहुत लोग. उसमें क्या, एक ही सिंपल है. Lot of people come to the programs and seminars and workshops. Not that everybody makes money. Is the one thing which stops them from making money, being open and coachable. If you're not ready to learn, or if you're not ready to unlearn a lot of things which we just mentioned, like belief systems and all that, then you can't move ahead. Because मेरे को पता है ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अरे ऐसा तो, ये तो गैम्बल, ये तो कुछ भी कर लो गैम्बल ही है. एक लॉस अभी सीखेंगे सब करेंगे, एक लॉस हो गया, बोला मैंने बोला था गैम्बल ये नहीं चलता है. तो that means you're not coachable. They don't give the system time to work. You have to give time. You have to believe. You have to believe in yourself first. You have to believe in us as a coach, as a mentor. You have to believe in the whole system as a whole, that it works. Then only it will work. And some time. We've seen this in content also, by the way. We've seen that we work with some people and they're like, but it's not working out. It's like, if you just run it through the system, it will work. And then once it does, it's like, oh, you were right all along. It's like, it's just, I think what it is ki in the world, because people have been, particularly around stock markets and finance, लोगों को गलत बातें इतनी बेची गई है ना कि उनका skepticism इंडियन कंज्यूमर का ऑल टाइम हाई है. Yes. ये क्या है कि अभी रिसेंटली आपने बहुत ऐसे किस्से सुने नहीं है, मैंने तो नहीं सुने, बट जब एक टाइम था तब ऐसा हर एक फैमिली में एक ऐसा आदमी होता है, दूर का चाचा मामा कुछ, तो स्टॉक्स में लगा, अरे इसने लाखों लगाए थे, फिर इसके सब निकल गए और सब अभी रोड पे आ गया, सब बिक गया. ऐसी एक कहानी सबको सुनाई जाती है. करेक्ट. शायद कभी कभी गलत भी होती है, लेकिन सुना देते क्योंकि डरा देते लोगों को, और वो कहानी दिमाग में छप जाती है. एंड वी ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग हैव मोर ऑफ नेगेटिव बायस, राइट. अगर कुछ भी हमको नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा याद रहते हैं, वो क्योंकि वो ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, हर्ट क्रिएट करते हैं वर्सेस पॉजिटिव एक्सपीरियंस. It's also true for videos, by the way. You know, 95% of YouTube videos like work with negative titles. Like, Absolutely. click on them. हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दो बड़े से बड़ा स्कैम, तो आप देखो व्यूज चेंज होने वाले. तो सो that's how human nature is, so that you can't go against it. But वो अभी sad part है, but then you have to ride through all this negativity, and then that's how you have to build. So, considering the environment that you came from, right, and now how are you raising your children or like your child to think about money, think about ये सब चीज़ें क्या हैं. अब खासकर मैं आपसे ये बात भी पूछता हूँ as a father also. जैसे कि my father made his wealth on his own, right, a lot of things, and so simultaneously he made sure that I experienced the downsides of life as well. कि जब पैसे नहीं होते वैसे कैसे, अभाव में भी जीना सिखाया, और जब ऊपर होते वो भी जीना सिखाया. So I'm very okay with like things going up and down. I'm a very stable head in that sense. आप अपने बच्चों को क्या ऐसा सिखा रहे हो कि भाई पैसे, क्योंकि अब आप तो पैसे वाले पापा हो, है ना? हाँ, तो अभी मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो, see whatever you do, you know that there is a saying that by third generation all wealth is destroyed, right? So अभी से लेसन उनको वेल्थ के बारे में तो ठीक है, लेकिन वैल्यू सिस्टम अगर समझ में आ गई ना, जो वैल्यू सिस्टम क्या है कि you have to work hard. Right? Even though we are in stock market or worked hard, like I'm working the hardest, like at this stage when I was before 10 years. When I'm building a company, and once you build, you have to work harder to keep it like that, to retain it, right? So that's how they see us. So what we lead by example. We spend a lot of time learning. So they know that learning is the only way to grow. We keep attending seminars and workshops. Sometimes we take them also. So they know what we are doing. And second is, we keep sessions for them also, like about finance, need versus want. जो हमने young investor किया था ना, उसमें दोनों को बिठाया था, by both my son and daughter. So they understand the need versus want. They are told to maintain a budget. They are told to maintain a sheet on what they spend, how much. Do you review them and point out notes? Yeah. And then whenever, so let's say my daughter is young and she says, okay, I want to buy this. Then I said that is a need or a want. One. Second, is it worth it? One. Second, do you need it?
and it's long, it's durable or not. So all those three, 4 checkpoints are there before they buy. कभी-कभी तो मन करता होगा, अरे मेरे बच्चे स्पॉइल कर देता हूँ यार, क्या हो गया? That's okay. We know where to spoil, but it's like a balance. Okay. But never give that assumption that you will get what. हाँ, वो ऐसा कभी नहीं होता है. वो तो कंट्रोल करना ही पड़ता है. But at the same time, we don't use that language that okay, we are middle class. जो मुझे बहुत बार बोला गया था मेरे बचपन में कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. We are middle. So we are tagging yourself. So we don't tag. Even if you want to buy something expensive, first, do you need it? Is it worth it? We can buy. I tell them that we can buy this, but do we need it? Is it worth it? Or do we need it right now? We can buy it later also. Or do you need one version lower or 2 version lower? That will also do the work. So that perspective we give, but we never say tag them. No, we can't afford it. That this we can't afford it is the biggest lie. Which, if you have read Rich Dad Poor Dad, of course, it says that we can't afford it. Like you are putting a full stop to your thinking. You say, how can I afford it? Like question mark. Then the mind starts working. So that kind of training and kind of coaching we have to give them. And apart from that, value system is being authentic, being ethical, and being working on your value system, learning always, right? Always learning, no matter how much you do. एंड मैंने उनको बोला आपको जो करना है, जैसे मैंने अपना पैशन परस्यू किया है तो आप कुछ भी कर सकते हो. और अगर वो पैशन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें पैसा नहीं बने, समझो फॉर एग्जांपल हो जाता है. हाँ, सो देन यू थिंक अबाउट दिस इज वेयर यू कैन लर्न स्टॉक मार्केट, विच इज ये आपका टेक्निकली फैमिली बिजनेस तो हो ही गया. हाँ, ये तो मेरा काम है, इसमें आपको आना है, आ जाओ. हाँ, माय सन इज ऑलरेडी ट्रेडिंग. Okay. He does passive kind of strategy, so that he knows that if I want to make, and if he wants to turn this into a passion also is okay, but so that's freedom we get. So that's the balance we need to keep. Plus I want one add thing is that recently in the last couple of years we have added a lot of, we believe in being wealthy versus being rich. I know you must be knowing the difference. So rich people have money, wealthy people have time, right? And wealthy means also mind, body and soul. So if you see our programs, we do a lot of meditations, affirmation, visualization. In fact, we have tied up with Sri Ravi Shankar's Art of Living Foundation for doing meditation program into our trading programs. So when we do a ABCT, anybody can trade, a 3-day program on trading and a 3-day happiness course, which is teaching them Sudarshan Kriya, teaching them pranayam and meditation and all. So what happens is in an overall holistic kind of a training you get, not only on how to make money. How to make money, all my strategies I give it on free on YouTube. My YouTube channel is all my strategies for free. But I know that it will not work to an extent because till the time you don't work on your mindset, your inner self, it will not work. And that's why we integrate all this coaching mindset, like Meghna is a mindset expert. We have a spiritual expert. Then we have habits. We have taken the rights to teach 7 habits of effective people from Stephen Covey. Oh, you have to take rights for that? Of course, you have to teach that as a whole curriculum. Okay. You can also, of course, mention the book or something, but we have taken official rights so that we can actually use their material. So you're a big like self-help books की जो OG किताबें हैं, you really love those. Absolutely, I love Napoleon Hill, I love Stephen Covey, right? I love Jim Rohn. All these are like the best gurus. Very interesting question then. एक तरफ stock market, business numbers, और एक तरफ आप visualization कर रहे हो. Those two are like at opposing ends, no? Because you're saying wealth, abundance come to me, and आप उसको picture को visualize कर रहे हो, देख रहे हो. And I have also done it, so I'm not like shitting on it. I'm saying कि they are at two opposite ends in a lot of ways. हाँ, but opposite मुझे नहीं लगता है combine करना चाहिए, क्योंकि खाली visualize करके थोड़ी जेब में पैसा आने वाला है. काम तो करना पड़ेगा ना. काम करने के बाद जब visualize करते तो काम का नतीजा अच्छा आ सकता है. जो डायरेक्शन में हमको चाहिए वो डायरेक्शन में जा सकता है. सो दैट्स हाउ यू यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अबंडेंस, लॉ ऑफ वेल्थ together. You're not like manipulating the market chart in your head when you're like abundance. You can't even do that. No? That's not in your control. Okay. So for me it's very fascinating. ये तो बहुत अलग चीजें हैं. हाँ, but that's what we try to merge it. And our students, when some people, you know what, after doing 1 year course, they say that पैसा तो ठीक ठाक बनाया लेकिन लाइफ बदल गई. And that's the biggest compliment we get. Like family members, husband, wife, their relationship has improved, their health has improved, their relationship with their kids have improved, that short temperament which was there has gone. So it's, we actually, मैं सच बताऊँ तो मेरे को बहुत self help and all that, I want to become a motivational speaker, inspire people. तो मुझे मेरे कोच ने बोला नहीं तू स्टॉक मार्केट है, तू स्टॉक मार्केट ही सीखा. तो फिर हम लोग ने मर्ज कर दिया भाई, स्टॉक मार्केट में भी हम मोटिवेशन इंस्पिरेशन मानता नहीं, क्या कर सकते हैं. सो दैट्स माय पैशन, दैट इफ आई कैन इंस्पायर समवन टू थिंक बिग, टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, then of course it is stock market or not,
that's what I love to do. I remember, I don't know, मैं आपका कोई इंटरव्यू देख रहा था, you mentioned astrology somewhere, and I remember I love Vedic इससे astrology. व्यूज बढ़ने वाले हैं आपके. जी, अच्छा, नहीं, वो ट्रोलिंग भी बढ़ेगी. नहीं. देखो मैंने ये पहन रखी अंगूठियाँ. नहीं. I love Vedic astrology. मेरे को उसकी कहानियाँ बहुत पसंद हैं. अभी रिसेंटली आजकल पता नहीं, मे बी इट्स अ मिस एट्रीब्यूशन टू वॉरेन बुफे, कि ये कोट बड़ा मशहूर हो रहा है कि क्या कहते हैं, मिलियनेयर्स तो बन जाते हैं लेकिन मिलियनेयर्स एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, ऐसा कोई कोट है. एंड इट्स लाइक डूइंग क्वाइट द राउंड्स, राइट? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट what is it about astrology that is a link to wealth from your standpoint? Okay, so because no, so let me explain more. Because आजकल it's taken a resurgence in even the very high-end mastermind money coaches abroad as well. Absolutely. I've been part of some of those masterminds, so Okay. I know. And I've been a follower of astrology and numerology. If you think they are called occult sciences, right? And there is a history to it. It's not like अभी आए क्रिप्टो जैसा 5-10 साल पहले आए ना, हजारों साल से चल रहा है. तो और उसके पीछे साइंस है. अगर जो जैसे हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस ना इज अनदर ऑकल्ट साइंस, आई वुड से. जिसको समझ में आता है वो उसके ऊपर कसम खाता है, उसके ऊपर तो मेरा लाइफ डिपेंड करता है, पूरा ट्रेडिंग डिपेंड करता है. बट जिसको नहीं समझ में आता है, नहीं चलता है, टेक्निकल चार्ट नहीं चलता है. तो इट्स सेम थिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी. इफ यू बिलीव, इफ यू हैव स्टडीड, देन यू विल बिलीव. And otherwise you'll say अरे ये तो बकवास है. So we follow numerology, astrology both, but it's not that मैं कुछ voodoo science पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ. But if what I understand is like the most important part of our life is the planetary actions. Your mood, your behavior, everything is driven by planetary action, whether you believe or not, right? And that's why we're in the territory of faith, by the way, right? Faith. ये हमारा faith है. Yeah, kind of. So and 14. There's a 14 cycle, like a lunar cycle, which happens, the waxing and waning of the moons and all that. So I had a podcast somewhere which I mentioned that's 3-4 months back, and there I mentioned that equinox is a date which is 21st September and 21st March, where the moon is between Earth and Sun, and the days are equal and all that stuff. You can find out that. And on those days, there is a planetary action happening, which affects the mood of people, which affects the market. Yeah. Okay, I said that, and there was a big troll on Twitter. अरे ये तो astrologer बाबा है and all that stuff. And that was July. Yeah. Okay, and I was like, I don't reply to anyone forever. For means never. So I will never send you happy birthday? No, not that way. I don't reply to any trolls or any negative comments or that, because I understand that they have not seen what I have studied. If you study, then you believe. Then comes 21st September. After that, when market's at the all-time high, and it drops. And it's been like downtrend since last 1.5 months. The trend changed. That's exactly what I said. That during equinox, there are markets when the trend change happens. Trend change means from an uptrend to downtrend, or a downtrend to uptrend, or a sideways trend. It actually happened, and that became one of my biggest trades of this year, 2023. And all my students also took the trade. And one day before the equinox, I made a video that equinox is coming. Be careful, market's going to take a turn, possibly. Next day, market turns. And now it's almost a month and market has not gone up. So there is a science to it, and there is a logic to it. If you study, it gives you an edge in the market. I think this is my biggest edge, because most of my big trades have happened on these dates. Right? And that one single simple information has helped me to create a lot of money for myself and my students. And now I don't even keep it secret. I'm opening saying here also, on that podcast also, on my videos also. So I know that only people who have faith, who have belief in themselves, in the system, they will make money. Rest will just observe and kya ho gaya. Right? And so I completely agree I completely believe in this. But it's not that every time 21st September comes or every time 21st March comes, I'm going to go and buy or sell the stock. It should match price, which is the price action technical analysis, and the astro cycle has to match if there is a reaction to happen. If there is no match, nothing happens. Yeah. And it's we're okay. still strictly in the territory of मेरे को ये पसंद है, I understand this, so that's why I'm using this logic. Absolutely. There is no guarantee that it's going to work for other people, right? No guarantee, and not guarantee that every time it's going to work. Yeah. But if I have this information, let's say I know that this is a science or this works, on that particular day, if I get a reaction of the market, my confidence and conviction in that will be much higher. Of course. And I can take a much bigger calculated risk than usual to make more money. मुझे तो ऐसा भी लगता है कि people should not view
these sciences, sorry, these arts or like these, इनको विद्याएं बोल सकते हैं, from the lens, जैसे साइंस में हम falsifiability यूज करते हैं ना कि ये अब नई एविडेंस आ गया, falsifiable हो गया. I don't think people should use it from the lens of science, because otherwise you will have nothing. There is a little element of faith and mysticism in it, and if you can attach that, you know, if it works for you, it works for you. As simple as that. Yeah, see what we say in we have this technical indicators in technical analysis. So we have this code. It's that it's not the indicator that works. It's the belief in the indicator that works, right? So like I use an indicator called RSI, Relative Strength Index. So for some people it's bakwas. Some people, for me, it's like the thing which I made the whole company on, because I use only one strategy, and that's another big message which I want to give to audience, that there are lots and lots of tools in technical analysis, lot of ways to make money in stock market. You don't need to go all over the place. You just need to stick to few of them or one of them, and I use this code called go deep, not broad, right? So what it simply means that you master one strategy, you master one tool, you master one way of podcasting, is master one product, one service, and that you go all the way, you become that category king in that business. If you try to do multiple things, you are average, like then you will be lost. Or you can do multiple things once you've absolutely scaled one. Yes, absolutely. Yeah, that's true. Yeah, actually, funny enough, yesterday I was thinking about the same thing. क्योंकि मेरे को ना एक knee में issue हो रहा है. So what I've been doing is I've been like buying programs left and right, like reading, and I've पूरा झमेला खड़ा कर दिया जो self help की दुनिया में बोलते हैं self help junkie, सब कुछ consume करता है. Then yesterday I decided, एक 7-day program है, पढ़ा हुआ है मेरे पास, अब मैं वो ही करूँगा. Perfect. Because I want to fix this. Let's try this one method, no? Instead of saying कि इसका ये ले लेते, इसका ये ले लेते. Why do I mix and match? It's like you are doing like what is what called allopathy and then homeopathy and then all kinds of medicines you are going to do, and you are going to mess up. You follow one, have faith, and then see the result. That's it. I wanted to ask you one more thing about like money, about kids. जो थोड़ा सा वो रह गया था, which is you said that you know आप उनको सब चीज़ें सिखाते हो, पैसे कैसे करने हैं, क्या करने हैं. घर में जो कई लोगों के बात नहीं होती, वो होती पैसों को लेके. जैसे कि अभी मैं कितने सारे दोस्तों को जानता हूँ अपने, उनसे बोलते हैं कि यार आपके घर पे बात होती नहीं, यार पैसों की बात थोड़ी करते हैं, कितनी ऐसे अशगुन टाइप की बात है. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई न्यू एग्जैक्टली how much money we had from a very early age, right? And like all the crippling lows and all the fantastic highs. तो हमारे घर में एक बड़ी ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन थी पैसों को लेके. मैं बड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को पता लग रहा है उनके पापा या मम्मी कितने पैसे कमाते हैं. एट एजेस लाइक 23, 24, 30 साल के हो गए, उनके पेरेंट्स का वो हो गया, लाइक यू नो, लाइक दे पास्ट अवे एंड दे आर लाइक ओ. And I realized it's such a bad thing to do. Like, so, like, how transparent do you get about like money conversations? We completely transparent. Of course, we don't get exact numbers and all those things because they are very like what we call gullible, and if they can speak again, they will talk out of context to other people. But at the same time, they should know that where we stand and what we can afford, what we can't afford, what is good, what is expensive, what is cheap, or what is reasonable. So those kind of things happen. Some numbers, because I'm in the public domain, I keep making videos on my trades, on how much I made and how much I lost. Plus my son is also trading. So to an extent, we are very transparent in that, and that's absolutely okay. And how do you teach your kids to talk about money? क्योंकि कई बार क्या होता है, especially when you have a wealthy dad, you know, तो थोड़ा ऐसा सिखाते हैं कि इनको चीज़ों को थोड़ा बचा के रखो, दुनिया भर में ऐसे वो नहीं करना. Yeah, that is always there. That's with me also, that whatever I have, I'm not going to show or talk about it more, because that's been the conditioning we had, one. And second, you don't need to. Why would there's something what we call as the evil eye or that, all that also. Plus, you don't need to show anything to anybody which they don't need to know. No, I'm also saying this because there is a very new kind of model that is emerged in the market of like young coaches saying I will like I've made 6 figures from this, 7 figures from this. मेरे को ऐसा लगता है भाई आप दुनिया को क्यों बता रहे हो आपने कितने पैसे कमाए हैं, like इस तरह से बता रहे हो, आप सबको पता है आपके अब कितने पैसे हैं आपके पास जेब में. No, see, in that case, I also make trades where I do make videos where I did a 6-figure trade or a 7-figure trade. But that's a one-off, right? Like yeah, one-off, not net worth, because that's not even possible, because there's all valuation game happening and all that, which I also don't know how much valuation. Some people say this and that, but see, one is to make a 6-figure trade or a 7-figure trade where there is to show off, like, oh, I made it, and that will come through on the video what you see, that whether he's showing off, whether he's trying to teach. And one is to show that possibility to people that from here I started,
from where I started, and from now I have reached here, and I can make it, so you can also do it. And when you explain the whole procedure and how I entered and how I exited and how I made money, how I made mistakes. So when I do a video on my trade, which is not very often, but whenever I do it, because I don't trade often, as I said, it's going to be more of passive than active. So whenever I make a trade, I keep a total analysis of my trade. What was my state of mind when I entered? What did I do? How did I execute the trade? How I exited also. Then how I re-entered, everything and I know that whenever I'm talking about big numbers, so at the end I have something called as gratitude kind of a talk, which is I first of all grateful to my mentors and coaches who have taught me all this, what I'm doing, my family for giving me the space to do what I do, my religion, my God and everything, and I try to humble down, because I know that if I sound arrogant to people, that won't go well, one, and second, I don't want to be arrogant because I know the next loss is coming soon. Yeah. Right. So I just want to cool down, but at the same time also show that, okay, this is possible. And I use the same strategy and the same method, what I've been teaching on YouTube also. And the same whatever method which I'm teaching. Wonderful. You know, I will say these chairs are very comfortable. I think I'm going to get similar chairs. बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के. हम उस पे ऑफिस वाली चेयर पे बैठते हैं उसमें, like after a while it gets very uncomfortable. Vishal ji, it has been an absolute pleasure to speak with you. Mostly because I came in very clueless about the stock market, and in fact like अपने skepticisms में लेके आया था, अपने biases भी लेके आया था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम पे अभी जाके फ़ोन पे ऐप खोल के वो कर रहा हूँ, but it's opened up a dialogue in my head about number one, emotional stability around these things, number second, systems, right, and number third, removing yourself, your hero's journey from how you make money. Right. ये तीन चीज़ें तो मैं अभी आपको इसके पंचतंत्र के लेसन बना सकता हूँ जो मैंने अभी के अभी सीख ली हैं. And once I rehear this conversation, and fourth is risk management. Fourth is risk management, and of course the wonderful poker analogy. I was actually not preferring to go play poker with my friends again, but now I think I will, because I've been doing like very helter-skelter stuff in my poker. But thanks to this, maybe I'll go play again. Obviously, since we're at the end of this, is there anything specific you would like to say to the audience? Maybe they can follow your work somewhere, something like that. Yes. So first of all, thank you so much for having me. It was a pleasure. Thank you for having me here in the studio. Second is, I actually said few things. I've been doing a lot of podcasts recently, but few things which I said here, I don't think I've said anywhere else. So this will be a tremendous value, especially that poker and casino analogy which we explained. Plus, we are completing 15 years of Malkan's You. So we are celebrating that this year, 2023, 2024. And we are giving you a lot of free stuff. Like our YouTube channel is there, Malkan's You. It has more than 1,300 videos, 2 videos a week. Second, we are doing free events, free seminars, free workshops, free virtual events. You don't need to travel. Plus, we give away free courses also that everyone should understand the courses. Everyone should understand stock market and then approach in that way, rather than blindly taking it कि gamble है, speculation है. और हमारे programs में when you join or anything, you don't only learn about markets. You also learn about yourself. You learn about spirituality. You learn about mind, body and soul, how to balance the whole thing and become wealthy, not only rich. Right? Difference between wealthy and rich. So I invite them to my channel or my courses and some free stuff which we can put in the link. So that's the message we want to spread. Awesome. Thank you so much. This was the podcast with Vishal Malkan ji, and we'll see you all in the next episode. Don't forget to subscribe. Take care. Bye-bye. And thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.